अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात वेलकम टू द फर्स्ट उधर देखूँ या इधर देखूँ वेलकम टू द फर्स्ट लाइव एपिसोड दिस इज़ एन अल्फा टेस्ट दिस इज़ नॉट एन एक्चुअल थिंग तकरीबन जो मुझे यूट्यूब से पता लगा है वो ये है कि 13 लोग मुझे देख रहे हैं और मैं चाहूँगा कि अगर आप लोग मुझे जो है कमेंट सेक्शन में आके थोड़ा सा फीडबैक भी देते रहें साथ साथ कि क्या अच्छा है क्या बुरा है क्या सही है क्या गलत है क्या हमें बात करनी चाहिए। आई एम जस्ट ट्राइंग आउट अ बंच ऑफ डिफरेंट थिंग्स। यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है वो भी मैं टेस्ट कर रहा हूँ साथ ही एंड सम ऑफ द फीचर्स फ्रॉम द सॉफ्टवेयर एज वेल। जैसे कि ये हमजा नवीद भाई ने ये सवाल पूछा है, सो इफ आई कैन क्लिक ऑन दिस। अरे कमाल है, सवाल आ जाता है। मुजम्मिल भाई, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई गॉट अ लिटिल क्वेश्चन रिप्लाई व्हेन यू आर फ्री। हैव यू सीन एनी सक्सेसफुल पीपल फ्रॉम डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स background like virtual university? Your opinion? Personally, I have and have not. Success is inherently relative. If you, for example, compare के अगर आप लम्ब से पढ़ रहे हैं, compare that to virtual university, obviously virtual university will not be anything close to what LUMS has to offer. बट अगर आप कहते हैं कि मुझे स्किल्स बिल्ड करनी है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी स्किल सिखाती है नहीं सिखाती, सिखाती है। एंड मे बी यू कैन गो फॉर अ मास्टर्स वेयर यू कैन लर्न द सॉफ्ट स्किल्स एंड द नेटवर्किंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो एक सिंपल येस नो में मैं आपको जवाब दे नहीं सकता। वर्चुअल यूनिवर्सिटी इज़ गुड बिकॉज जिन लोगों के पास एक्सेस नहीं है प्रॉपर यूनिवर्सिटी का, दे कैन एटलीस्ट स्टे एट होम एंड बी एबल टू स्टार्ट एजुकेटिंग देमसेल्व्स। But is it as good as some of the top universities? Probably not. But anyways, this was a test to see questions पे हम अभी आते हैं। पहले तो मुझे ये बताएं कि मुजम्मिल भाई, what do you think about forex trading and prop firms? यार इस पे मैं इसका जवाब देता हूँ थोड़ी देर में। How do I answer the question about how one can start? Achha, please do answer the question about how one can start podcast, grow YouTube channel. I will definitely do that. Why you think that this live thing is going to be a big thing in the near future? I think let's start with that. Is this like the normal YouTube live stream? This is. I just went to go live, clicked on go live and just went with it. Difference is obviously I had a studio setup, तो मैंने अपने जो वीडियो और ऑडियो का सेटअप है वो मैं वही वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ जो मैं पॉडकास्ट के लिए इस्तेमाल करता था। सो आई एम नॉट श्योर कि क्वालिटी कैसी है। Let me know in the comment section कि आप लोगों को वीडियो और ऑडियो कैसी आ रही है। बट यस, चौधरी तैयब साहब कह रहे हैं मैं प्यारे लग रहे हैं मुजम्मिल भाई। थैंक यू चौधरी तैयब साहब। आई थिंक दैट्स गुड वैलिडेशन। बट एनीवेज, टू आंसर द क्वेश्चन, मरियम इकान ने कहा है व्हाई डू यू थिंक लाइव इज गोइंग टू बी अ बिग थिंग इन द नियर फ्यूचर। देखें, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि लाइव एज अ मीडियम हैज़ ऑलवेज वर्कड। टेलीविजन पे हम लाइव हमेशा देखते आए हैं, न्यूज़ चैनल्स के लाइव हम हमेशा देखते आए हैं, और काफ़ी दफ़ा जो हमारी जो जेन जी है और जो लेट मिलेनियल्स हैं वो अब टीवी बिल्कुल भी नहीं देख रहे। और उसमें हम ये कहते हैं कि अच्छा नहीं, टीवी इस वजह से नहीं देख रहे बिकॉज एक्चुअली लाइव स्ट्रीम डजंट वर्क, या जो उसकी फॉर्मेटिंग है डजंट वर्क। दैट्स एक्चुअली नॉट ट्रू। दैट्स लार्जली बिकॉज टीवी जिस ऑडियंस को बेसिकली सर्विस कर रही है वो एक बहुत डिफरेंट ऑडियंस है। जो हमारी अर्बन एजुकेटेड यूथ है वो ना समझ पाती है वो बातें, ना वो इंटरेस्टेड है उन बातों में। तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि जिस तरीके से आपके रात के 9 o'clock या 10 o'clock न्यूज़ चैनल पे न्यूज़ शोज़ आते थे, उस तरीके से अगर आप मीडियम को शिफ्ट कर लें, अगर आप टीवी चैनल के बजाय उसको आप ले जाएं यूट्यूब के ऊपर, ट्विच के ऊपर वगैरह वगैरह, तो आई थिंक देयर इज गोइंग टू बी अ ग्रोइंग ऑडियंस दैट्स गोइंग टू वांट टू कंज्यूम दिस कंटेंट। बट मोर इम्पोर्टेंटली लाइव का एक सर्टन एस्पेक्ट ऑफ इंटरेक्शन है जो कि you know you're writing comments, I can read them, we can bring people on, let's say multiple लोगों को मैं रन टाइम पे इस पे लेकर आ सकता हूँ, मैं आप लोगों में से किसी को वीडियो क्वालिटी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लेकर आ सकता हूँ। आई थिंक दैट सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन is just phenomenal. It's the way that मतलब आप पुराने वक्तों में तो बस टीवी होता था, जो दिल क्या बोला और उसके बाद कंज्यूमर को कुछ पसंद आया नहीं पसंद आया, nobody cares, right? फिर इंटरनेट आया तो आपको कमेंट सेक्शन आ गए। बट दिस इज एक्चुअली वेयर वी कैन एक्चुअली बिगिन टू कम्युनिकेट रियल टाइम के अंदर, एंड आई थिंक दैट इज फेनोमिनल, एक्सेप्ट इट हैजंट बीन एक्सप्लोर्ड इन पाकिस्तान। दूसरा ये कि दुनिया भर में अगर आप देखें तो ग्लोबली लाइव इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मीडियम, चाहे वो ट्विच के ऊपर हो, चाहे वो यूट्यूब के ऊपर हो। एंड जो अगेन मैं बार बार इस पे कहूँगा कि जो इन्फ्लुएंस डेवलप होता है ना क्रिएटर का और
कंज्यूमर का जो इंटरेक्शन होता है उसकी वजह से जो एक सॉर्ट ऑफ कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है वो आपकी रेगुलर वीडियोस में होता ही नहीं है. So even though at any given time there will be lower viewership than your recorded scripted videos, but the influence and the connection that you will establish with that lower viewership वो कम होगी. मतलब number of viewers कम होंगे but connection बहुत ज़्यादा होगा. So that's my thought. अच्छा जी, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आना शुरू हो गए हैं एकदम से, तो थोड़ा सा ये ओवरवेलमिंग भी रहता है. 56-57 लोग हमें देख भी रहे हैं. हाउ कूल. So हमारा 50 वाला जो बेंचमार्क था, we've crossed that as well. Okay. Which features do StreamYard provide? I have no idea. अभी तक मुझे ये पता है कि मैंने अपनी वीडियो कनेक्ट की है, मैंने अपनी ऑडियो कनेक्ट की है और मैं लाइव चला गया हूँ. मैंने भी पैसे नहीं दिए हुए और ये 720p में जा रहा है. Even though I have a 1080p A7 IV that's recording this, but अभी मैंने, क्योंकि मैं सस्ता हूँ और मैंने टेस्ट करने के लिए पैसे नहीं दिए, $25 मांग रहा था वो मेरे से, तो मैंने कहा आज मैं ये टेस्ट करता हूँ. कल वाली जो होगी मोस्ट लाइकली उसमें ये StreamYard का पावर्ड बाय हटके इसमें 189 का लोगो आ जाएगा. उसमें वी शुड बी एबल टू integrate some banners, stuff like that. मैं चाह ये रहा हूँ आइडियली कि मैं एक फ़ोन कॉल का नंबर प्रोवाइड करूँ, बिकॉज जो मेरा ऑडियो सिस्टम लगा हुआ है उसके अंदर आई कैन टेक कॉल्स एज वेल. तो यहाँ पे एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा जिसके ऊपर यू कैन कॉल लाइव रियल टाइम के ऊपर, एंड यू नो वी कैन हैव दैट इंटरेक्शन एज वेल. फिर उसके अलावा जो है मल्टीपल, जिस तरह अब आई डोंट नो इस पे शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, बट आई हैव ऑप्शंस कि मैं इसको स्प्लिट स्क्रीन कर लूँ, मैं किसी और को वीडियो कॉल पे ले आऊँ और उसको मैं स्प्लिट स्क्रीन में डाल दूँ, या मैं अपनी स्क्रीन दिखा दूँ. एंड आई एम गोना बी, अगर सवाल ये है कि what is this and what am I planning this for, देखें मल्टीपल चीज़ें हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांटेड टू, आई फील लाइक जो पॉडकास्ट है उसके ऊपर आई लिसन टू अ लॉट ऑफ पीपल एंड आई हियर अ लॉट ऑफ ओपिनियंस, एंड जब मैं थोड़ा सा ज़्यादा अपना ओपिनियन देने लगता हूँ तो लोग कहते हैं मुज़म्मिल भाई आप होस्ट हैं, आप चुप करके बैठ जाएं, which makes sense as well. But over the course of the last 3 years, I have spoken to 370 thought leaders on camera and off camera. मतलब सबसे मज़ेदार बात 30 मिनट after the podcast closes होती है. And because of that, I've gotten a lot of insight. I've actually learned a lot of things about Pakistan, about the systems, about business, about economics. And so I've developed a lot of opinions as well. And I thought कि मैं वो share कर सकूँ अपनी thoughts and opinions आप लोगों के साथ. उसी के साथ साथ obviously मुझे generally, मैं अगर Instagram पे जाता हूँ, मैं economy के बारे में कोई बात करता हूँ, तो people get very anxious. That is not the right platform. और अगर मैं कोई scripted छोटी वीडियो डालता हूँ तो ऐसे लगता है कि जिस तरह पता नहीं कोई मैंने बहुत रिसर्च करके you know कोई पीस डाल रहा हूँ, तो it becomes very very controversial very very quickly. This is more of a बैठक. इसका पर्पस, इनहेरेंट पर्पस ये है कि बैठक है रात के 11 बजे, आज तो आई थिंक 11:30 बज रहे हैं पाकिस्तान के, बट मेरा आइडिया ये है कि रात के 11 से 12 बजे या 12 से 1 बजे एक बैठक है जिसमें आप भी आएँ, हम भी आएँ, भाइयों की तरह बैठ के कुछ डिस्कशंस करें, कुछ थॉट्स डिस्कस करें, you know, entertainment related, serious, all sorts of things. मैं I could potentially, अगर कोई वीडियो वायरल हो रही है, I could review that video. अगर कोई major news item है, I could talk about that news item. But really the idea is कि एक अच्छी मजे की smart space हो जहाँ पे smart बातें हों और smart thoughts share हों, ना सिर्फ मेरी तरफ से बल्कि आपकी तरफ से भी, because which is why the comment section thing has to be very very important. मैं बार बार जो इस वजह से कह रहा था कि if you don't interact, if you're just here to listen, then there's not a lot of value. The real value is the interaction that we're going to have. अच्छा जी. Hello, Muzamil bhai. So glad to see you live here. I'm a big fan of yours and Hamna's work. How's life going in Dubai? Have been here for 8 years, then a 2-year gap to Pakistan, now settling again in Dubai. Yeah, Dubai is interesting, exciting, fascinating, but also extremely scary as well. हम इस्लामाबाद से आए हैं. इस्लामाबाद एक छोटा शहर है, सिंपल शहर है. वहाँ पे हमने कभी पैसे कमाना नहीं सीखे, पैसे उड़ाना नहीं सीखे, बस जो सिंपल लाइफस्टाइल था वही रहना सीखा है. Dubai, obviously, like Karachi, London, New York, it's a big city and everybody's hustling, everybody's just, it's super super fast. और पहली दफ़ा ज़िंदगी में मैं एक अपनी फैमिली ओन्ड हाउस से एक रेंटल प्रॉपर्टी में आया हूँ. So it is definitely very very scary to you know, uproot yourself and then come and live in this new environment. Having said that, I'm having a lot of fun because Pakistan mein, very honestly, I was surrounded by a lot of negativity, you know, politics ये, economics ये, एंड मुझे लग रहा था कि मैं ग्रो नहीं कर पा रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ जो है ना बस नेगेटिविटी कंज्यूम कर रहा हूँ और मैं एक दड़बे में बंद होता जा रहा हूँ. सो दुबई आके आई एम मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल, आई एम यू नो शेयरिंग थॉट्स अबाउट AI, about you know, machine learning, about the future of Web 3.0,
एंड इस तरह की कॉन्वर्जेशंस आर व्हाट ड्राइव्स मी, व्हाट गिव मी अ लॉट ऑफ एनर्जी. तो ओवरऑल दुबई की जो वाइब है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, टॉप टू बॉटम, अमीर आदमी हो, गरीब आदमी हो, हर बंदा जो है ना वो कह रहा है कि आई वांट टू मेक इट बिग, आई वांट टू वर्क हार्ड. वो एक टेम्परामेंट है, कल्चर है एक दुबई का, जो कि मुझे बहुत फैसिनेट कर रहा है. एंड सो यस, मिक्स्ड फीलिंग्स बट मोर टिल्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव. एंड अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वेरी वेरी हैप्पी एंड satisfied. Um, Hi Midal bhai, why are you not tapping into the medical field? I did actually got a few people from the medical side. We got the guy who makes medical equipment, Nast ke the. Then we had the guy जो Indus Hospital चलाते हैं. I mean, we got a bunch of those folks. सेहत कार्ड वाले साहब आए थे. Problem ये है कि people don't like to watch that. I'll be very honest. I mean, education and health are two things which are very, very important, but do not have the viewership. And if people aren't interested, obviously मैं क्या ही बात करूँगा. दूसरा एक और मसला ये भी है कि मुझे पर्सनली ये लगता है कि उन कॉन्वर्जेशंस में ना आप जेनरिक बातें हो चुकी हैं. पाकिस्तान में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, पाकिस्तान को एजुकेशन की ज़रूरत है, पाकिस्तान का बहुत बैड सीन है, हो गई बात. अब अगली कॉन्वर्जेशन में कुछ और नहीं होता. सेम विद हेल्थ. पाकिस्तान में हेल्थ का क्राइसिस है, पाकिस्तान में डॉक्टर्स की पे नहीं है, पाकिस्तान का ये 4 बातें हो गई. अब उसके बाद कुछ नहीं है. अगर करना है तो उसमें टेक्निकल बात होगी. वो आई फील लाइक दैट इज़ वे अबव माई पे ग्रेड. आई थिंक सम डॉक्टर शुड स्टार्ट अ मेडिकल एक्सक्लूसिव मेडिसिन रिलेटेड पॉडकास्ट, जिसमें वो medicine as an academic subject and also uska business aspects they can discuss that. Again, it's an idea. There is definitely a demand in the niche, so someone else can do a podcast if you're a doctor and you want to specifically focus on that niche. That's a great idea to start. Everything looks nice, but video quality isn't 1080p. That is absolutely true because I'm a cheapo and I didn't pay $25, so it's actually uploading at 720p. If you go in the quality YouTube की, तो उसमें 320 और 480 भी आ रहा है depending on your internet, but it is up till 720. 720 में काफ़ी quality की, अच्छी quality की आपको नज़र आ जाएगी, but still it's not up to mark. Hopefully tomorrow or day after, I will have 1080p up and running as well. Voice quality 10 on 10, alhamdulillah. How does one become a startup consultant without having your business, but you can craft business vision and other nitty-gritty details as well? I don't understand this question. If you can please give more context of what you mean by that, maybe I should be able to answer it. ये बहुत एक generic सवाल है और मैं इसको out of context जवाब देके I feel like कि मैं वेस्ट करूंगा. Also, by the way, बहुत सीरियस सवाल करना शुरू हो गए यार आप लोग. मेरा ये पॉइंट इस पॉडकास्ट तो नहीं है, ये इस लाइव में मैंने बैठ के बहुत ज़्यादा, ठीक है मैं इधर उधर आगे पीछे कर लूँगा, बट थोड़ा सा ज़्यादा चिल करने का मेरा मूड है. मैं वो वाइब फ्रॉम द वेरी स्टार्ट बिल्ड करना चाह रहा हूँ. द आइडिया इज टू चिल अ लिटिल बिट. सो थोड़ा सा इतना सीरियस स्पेसिफिक सवालात उस तरह के ना करें, अगर तो ये कम करें तो बेहतर है. Muzammil bhai, what do you think is the real meaning of life? I think you are finding the same answer in your current philosophical crisis. Sorry if it's offensive or inappropriate. It is not at all offensive or inappropriate. And to be very honest, I don't know the answer to that, but you're absolutely right. This is probably number 1 or number 2 in terms of the questions that I have these days. कि मकसद क्या है. पहले मुझे लगता था कि मकसद जो है वो है ओवरऑल फ़लसफ़े का, बियॉन्ड द मनी एंड ऑल ऑफ दैट. क्योंकि मेरा ज़ाती, मैंने नईम सिकंदर की पॉडकास्ट पे ये बात बोली थी कि मुझे लगता है हर इंसान के पीछे 3 P's होते हैं जिस पे वो ड्राइव हो रहा होता है: पैसा, पावर और पॉपुलैरिटी. यानी कि कोई भी इंसान है, जितना भी वो डिनाई कर ले, नहीं जी मैं तो ऐसा हूँ वैसा हूँ, एवरीबडी वांट्स मनी, एवरीबडी वांट्स कि मेरे पास जितना पैसा आ जाए उससे ज़्यादा पैसा हो जाए, कोई इसमें बुरी बात नहीं है. Similarly, people inherently like to be popular. अगर उनको तमीज़ से अच्छे तरीके से पॉपुलैरिटी मिल जाए तो they always gravitate towards that. And third is obviously power. कि I have control and power over something. It makes people feel good and happy. And obviously ये ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को हर पी चाहिए होता है. So मैं जनरली लोगों से ये पूछता हूँ कि तुम्हारा पी क्या है, what drives you, right? Some people want to stay अपने बबल के अंदर, वो ज़्यादा पब्लिक में नहीं आना चाहते, लेकिन they want to make money. Some people want a lot of power, they don't care about money or popularity. तो एक मेरा ये मेट्रिक था पहले कि मैंने इसके अंदर पैसा, पावर, पॉपुलैरिटी, इसमें मुझे क्या चाहिए. एंड उसमें आई थॉट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि मुझे शायद पावर चाहिए, द पावर टू क्रिएट इम्पैक्ट, गुड और बैड, व्हाटएवर. But recently, that was mostly driven by certain things that I knew
और आई हैड ग्रोन अप विद नोइंग सर्टन रियलिटी, सर्टन फंडामेंटल्स, जो बिलीफ्स थे, वो बिलीफ पिछले 1-1.5 साल में completely रीडिज़ाइन हो गए, completely shatter हो गए. Not just because of the environment कि economy बुरी है या politics ऐसी है, but because certain experiences that I went through as well, where मेरा एक belief था about people, about society, वो break हो गया, to be very honest. जिसकी वजह से अब पहले मेरा ये होता था कि यार you know what, हम ज़िंदगी में हम पैदा हुए हैं और हम इस ज़िंदगी में आए हैं because हमें we have to do good and be good and make lives better for people around us. और मेरा इनहेरेंट ये बिलीफ था कि आप पीएचडी कर रहे हैं मैथमेटिक्स में, आप रॉकेट साइंस पे काम कर रहे हैं, आप नई नई चीज़ें दरियाफ्त कर रहे हैं, तो आप अल्लाह ताला को खुश कर रहे हैं, आपको सवाब मिल रहा है. आज भी मेरा ये बिलीफ है कि ऑल ऑफ दैट इज पार्ट ऑफ योर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ऑन द प्लैनेट. बट थोड़ा सा ना मैं I'm a little lost. I'll be very honest. And so, anyways, it's falsafa. That's what's on my mind. But to answer your question, I don't think I can give you a real meaning to life. Maybe I could have given you 12 months ago. वो भी सही नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट मेरा कॉन्फिडेंस था उस वक्त कि मैं बता सकता कुछ. आज मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है. फेयरली लॉस्ट. एंड सो आई डोंट रियली नो, बट दीज वर सम ऑफ द थॉट्स जो मैंने आपसे शेयर की, और इससे आगे मेरी थॉट्स डेवलप हो रही हैं. मुज़ल भाई, आपकी मैंने बहुत पॉडकास्ट एपिसोड देखी हैं. आपके पास माशाल्लाह इतना नॉलेज है, लेकिन फिर भी आप लाइफ को लेकर इतना कंफ्यूज क्यों हैं? आपने लास्ट वीडियो में बोला द 13-year-old ब्रो. यार मैं लाइफ में कंफ्यूज इस वजह से हूँ बिकॉज मैंने उस वीडियो में भी ये बात बोली थी कि मैं एट द एंड ऑफ द डे अल्हम्दुलिल्लाह नॉलेज है. आप लोग ही कहते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि नॉलेज है. मेरा इतना कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज़्यादा नहीं है, टू बी ऑनेस्ट. बट अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं. मसला वही है, इट्स द कंफ्यूजन. आई ट्राई नॉट टू डू थिंग्स माइंडलेसली. आई ट्राई नॉट टू जस्ट जंप ऑन टू थिंग्स. तो मैं कंफ्यूज इस वजह से हूँ बिकॉज इस वक्त सब कुछ बदल गया ना. एनवायरनमेंट बदल गया, सर्कमस्टांसेस बदल गए, दुनिया बदल गई. तो कंफ्यूज तो बंदा होगा बिकॉज आज के जो डिसीजंस हैं वो इवेंचुअली एवरी डिसीजन दैट आई टेक इट्स लाइक a butterfly effect, right? I have a billion different futures that I can create. And so we're at this pivotal moment where every decision is going to completely create a different version, a radically different version of the future. And so I want to make sure that I take the right decision, not for कि मैं उस right decision से मुझे बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदा मिल जाए in the future, but ऐसा decision जिससे मैं satisfied हूँ. मैं अपने डेथ बेड पे ये ना कहूँ कि लुकिंग बैक यार वो गलती कर गया उस टाइम के ऊपर. should have pursued something different and maybe things would have worked out differently. मुझे जनरली ये होता है कि people generally pray for a lot of things कि मुझे ये मिल जाए, ये मैं चाह रहा हूँ, मुझे ये मिल जाए. I generally pray for कि मुझे satisfaction मिले, मुझे happiness मिले. I just don't want to be unhappy in the future because of a decision that I take, तो फिर जब ये एक बड़ा आर्बिट्री फिलोसफी की बात है तो उसकी वजह से ऑब्वियसली फिर कंफ्यूजन बढ़ जाती है. अगर होता है कि यार पैसे कमाने हैं तो फिर मेरे पास काफ़ी अभी इंडिकेटर्स थे जिससे बड़ा क्लियर था कि यार ये कर लो और अभी अच्छा पैसा मिल जाएगा. बट फ़लसफ़े में थोड़ा सा हम बह गए हैं जिसकी वजह से कंफ्यूजन थोड़ी ज़्यादा है. ख़याम भाई कह रहे हैं जी, आई थिंक फ्रेम शुड बी वाइड विच विल मेक अस फील वेलकमिंग. नाउ इट्स compressed, beautiful and perfect, but I think it's a bit raw, would make it feel more welcoming. Just a thought. You guys let me know, should I push the camera back a little bit and make it a bit more wider, or should it remain as it is? जाहिर है कि उससे खूबसूरती एक आ रही है, blurriness background के अंदर. What are your thoughts? Would love to hear. What's your stance on podcasts? Is this going to grow in future more and will going on same pace? I believe people more like interested in Shashke type content instead of informative talks. Yeah, I genuinely believe that podcasts are having their breakthrough moment. Definitely a medium बहुत ज़्यादा grow करेगा. मसला ये है कि how do you define a podcast? हमारे यहाँ unfortunately क्योंकि मैं था, जुनैद भाई थे, 2-3 और लोग थे, तो podcast define हो गई as two people sitting down and having a conversation, which is just absolutely not true. That is just one genre of podcasts. पॉडकास्ट्स का जो ओवरऑल इंडस्ट्री है वो पूरी दुनिया में ग्रो कर रही है और उसके अंदर ऑडियो फर्स्ट है. पहली बात, वो हमारे यहाँ अभी तक वो वीडियो फर्स्ट ही चल रही है, लेकिन वो इवॉल्व हो जाएगी, दैट्स फाइन. दूसरा ये कि आई थिंक पॉडकास्ट्स के अंदर पीपल नीड टू नाउ इनोवेट एंड सी व्हाट्स हैपनिंग अक्रॉस द ग्लोब. लाइक एवरीबडी, लिटरली मैं देखता हूँ, पत्थर उठाता हूँ, 15 और पॉडकास्ट हर हफ्ते आ जाती हैं जिसमें लोग लोगों से बातें कर रहे हैं. एंड व्हाट्स द पॉइंट, राइट? कितने लोगों से आप बात कर लेंगे?
कितने ही गेस्ट्स आ जाएंगे, और फिर वो फॉर्मूला है ना, फिर वो अगर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल स्टोरीज, तो फिर वो एवरीबडी इज गोना बी डूइंग पीपल स्टोरीज। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट, और ये चीज़ पाकिस्तान में मैंने देखा है बहुत ज़्यादा होती है कि आपके पास एक सक्सेसफुल चीज़ आती है एंड यू जस्ट वांट टू कॉपी पेस्ट द शिट आउट ऑफ इट, जिसका नुकसान ये होता है कि जो एक दो लोग कर रहे होते हैं वो भी बह जाते हैं बिकॉज देयर इज जस्ट टू मच कंपटीशन। अगर आपको याद हो एक ज़माने में फ्रोयो बड़ी मशहूर हुई थी, एवरीबडी इन पाकिस्तान वाज ओपनिंग अ फ्रोयो शॉप एंड नाउ देयर आर नो फ्रोयो शॉप्स। तो वो यही होता है, एक सक्सेसफुल बिजनेस आता है, बस क्रिएट करता है एंड देन एवरीबडी फॉलोज। तो पॉडकास्ट के साथ भी वही हो रहा है। मैं नहीं कह रहा कि कंपटीशन ना आए, आई लव कंपटीशन, बट इनोवेशन के साथ आए कि वो मुझे भी थोड़ा पुश करे कि यार ओ लुक एट देम, दे आर डूइंग समथिंग न्यू, मे बी आई शुड डू समथिंग न्यू एज वेल। मोस्टली इस वक्त जो पॉडकास्ट आ रही हैं, देयर द सेम ओल्ड, लाइक यू नो, दो लोग बात कर रहे हैं, मैं भी बात कर लेता हूँ, मेरा स्टूडियो बेहतर हो जाएगा, मेरी क्वालिटी ऑफ ऑडियो बेहतर हो जाएगी, मैं शायद कॉन्वर्जेशन डिफरेंट कर लूँ, बट it's still the same. So the industry will grow, but in terms of who will actually be part of that growth, it will be someone who innovates, who will be like, जिसको पुराना पॉडकास्टर देखे कहे ओ यार वाह क्या कमाल काम कर दिया, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं ऐसी चीज़। कॉपी पेस्ट इज नॉट गोइंग टू ग्रो एज मच। जनरली ये होता है कि किसी भी जॉनरा के अंदर जब पहली दफ़ा लोग आते हैं, तो वो जब नाम बना लेते हैं ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक दैट नेम, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगेन आप देख लें जाके, वाइन्स के अंदर बेकार फिल्म्स, कराची वाइन्स वगैरह आए थे, आज तक देर एट द टॉप ऑफ देयर गेम। हम बाकी 10 और आ गए, लेकिन जो फर्स्ट मूवर है वो फर्स्ट मूवर ही है। इसी तरीके से व्लॉग्स वाज इरफान जुनेजो, आज इरफान बहुत कम व्लॉग्स बनाते हैं, देयर आर लॉट ऑफ अदर पीपल हु आर मेकिंग व्लॉग्स, बट you think vlog and you think Irfan Junejo. So first mover advantage is a very real thing. It happens. And so if you truly want to do something within this space, so it has to be innovative. बहुत अच्छी मिसाल ये होगी, व्लॉग्स के दिमाग में इरफान जुनेजो आता है, लेकिन फूड व्लॉगिंग के दिमाग में आपके राना हमजा सैफ आते हैं। तो राना हमजा सैफ सॉ व्लॉगिंग, बट ही वाज लाइक, ही डिडंट गो फॉर कि यार अच्छा इरफान भाई अपनी लाइफ दिखा रहे हैं तो मैं भी अपनी लाइफ दिखाना शुरू कर देता हूँ। ही वाज लाइक ओके, व्लॉगिंग इज डेफिनेटली देयर, बट नाउ आई विल टेक व्लॉगिंग, आई विल इनोवेट अ लिटिल बिट, फोकस ऑन अ नीश and then take it from there. And so Rana Hamza Saif became huge. Shout out to him, one of the most humble people I've ever met. A huge fan of his work. But anyways, those are my thoughts. Ibrahim Murtaza साहब, अच्छा ये कमेंट रिपीट हुआ हुआ है, उफल्ला बहुत ज़्यादा आ गए, तो I'm gonna skip a bunch of comments and I'm going to come to the most recent ones. पता नहीं यार, ये तो अगर मैं घंटा बैठ के I'm just gonna keep on answering people's questions. Should it be like this? Isn't this boring? Where people are just waiting for their questions to be answered. I feel like there should be a different model. मैं ये सोच रहा था कि मैं ना आधे घंटे पहले बैठूं और मैं अपने थोड़ा सा ना बैठ के एग्रीगेट करूं certain thoughts, क्योंकि मैं हर दिन बैठ के पढ़ रहा होता हूँ। I read generally 150 articles a day कि जी क्या हो रहा है, अफ्रीका में जंग होने वाली है, नाइजर की, उसके अलावा लेफ्ट राइट के ऊपर जो है वो रशिया और यूक्रेन की वॉर हो रही है, उससे बड़ी दुनिया चेंज हो रही है। आने वाले वक्त में जो है वो अभी कमोडिटी सुपर साइकिल आने वाला है, तो उसकी वजह से कमोडिटी सुपर साइकिल में तो हम थे, कमोडिटीज़ की प्राइस बढ़ने वाली हैं, जिसकी वजह से विंटर बड़ा मुश्किल होगा और मज़ीद महंगाई आएगी। दीज आर थिंग्स दैट आई हैव जस्ट बीन रीडिंग ऑन द इंटरनेट, एंड सो आई थॉट कि मेरा थॉट ये था कि मैं आऊँ थोड़ा सा ना प्रिपेयर करके कि अच्छा आज मैंने क्या 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 पढ़ा, और वो सिर्फ सीरियस बातें नहीं हो सकती, कुड बी एंटरटेनमेंट, राइट? कि डकी भाई की ये कंट्रोवर्सी चल रही है, क्यों चल रही है, क्या थॉट्स हैं उसके बारे में, मे बी आई कुड स्पीक अबाउट दैट एज वेल। एनीवे, सो मैं आऊँ 40-45 मिनट बैठ के उसके बारे में बात करूँ, एंड देन वी ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस, एंड देन वी टेक दोज क्वेश्चंस। अदरवाइज तो घंटा मैं सिर्फ और सिर्फ ये टू एंड फ्रॉम करता रहूँगा, और फिर वो आई थिंक इट विल बी अ लिटिल बिट अनोइंग for you guys as well. Don't answer every question, but like the ones you think everyone can benefit from. Saim Rahman is here. Oh, Saim bhai ne sahi entrance mari hai. Saim here. Saim says assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Saim bhai, I've been waiting for some new and fresh content coming from you. आप अगर अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे टाइम वेस्ट करना बंद करें और थोड़े से कंटेंट के ऊपर टाइम गुजार लें, तो आई थिंक पूरी इंडस्ट्री जो है वो खुश होगी। आपने इरफान जुनेजो, राना हमजा सैफ और डकी भाई का नाम ले लिया है, आप बोलें तो आपकी कंट्रोवर्सी बनवा दूं। ख़याम भाई फौरन से पेशतर कंट्रोवर्सी बनाएं ताकि मुझे व्यूज़ आएँ। ये जो मेरा चैनल है ना, ये व्यूज़ के लिए, ये शेमलेस सेल्फ प्रमोशन और व्यूज़ के लिए। और उसमें मैं ना, आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव बीन वेरी केयरफुल इन माई लाइफ, क्योंकि मैं छोटा सा कुछ लेफ्ट राइट बोलता था और लोग आके उसके ऊपर कंट्रोवर्सी बना देते थे। नाउ आई, फॉर अ लैक ऑफ बेटर वर्ड, नाउ आई डोंट गिव अ फक कि मैं जो है वो वेप करूं या मैं गालियां दूं। बहुत गंदी गालियां मैं नहीं दूंगा, मेरा वो तर्ज ही नहीं है, बट आई विल बी अ लॉट मोर माई सेल्फ ऑन दिस चैनल,
बिकॉज द फैक्ट इज पीपल आर लाइक दैट. पता नहीं मेरे से लोग मुझे पेडेस्टल पे डालते हैं किसी जगह पर और एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं कोई मैजिकली कोई बड़ा अच्छा आदमी हूँ. मैं नहीं हूँ अच्छा आदमी, ना मैंने कभी क्लेम किया कि मैं अच्छा आदमी हूँ. तो आप अगर कंट्रोवर्सी बनाएंगे, जनरली लोग, आप नहीं लोग अगर बनाएंगे, तो मैं अब I don't mind. आप बनाए controversy. I will come back on the next live and I will move on and do the next thing and I don't really care कि इंटरनेट में खलबली मच रही है नहीं मच रही, क्योंकि बड़ी मैंने उसके ऊपर खप मचा दी. आइज रजा कहते हैं जी प्लीज डोंट स्टार्ट अ थीसिस ऑन एवरी थॉट. अच्छा तो फिर क्या करें यार आइज भाई, अगर तो मैं तो हूँ ही इस किस्म का कि मैं तो हर चीज़ के ऊपर जो है ना फलसफा ले आता हूँ, तो अगर मैं वो ना करूँ तो मे बी आई कैन play a video game. Do you guys think I should play a video game? I haven't played one in almost 15 years, but I feel like that's so basic. Like a guy going through midlife YouTube crisis ends up playing video games and starts doing live. तो वो थोड़ा सा ज़रा basic हो जाएगा, I feel like. But maybe I could do that as well. Is BScs degree good for the future? Yeah, yes, it is great for the future. If this question keeps on coming up, it's great for the future. Not even going to go into detail. I think you need a moderator to filter out questions. बेहतरीन थॉट है. अगर कोई मॉडरेटर बनना चाहता है हर रात 1 घंटे के लिए, तो वॉलंटियर कर सकता है, क्योंकि ना मैं कोई से ₹1.5 के पैसे कमा रहा हूँ और 90-95 लोग हैं, तो इतना कोई ज़्यादा कोई वो भी नहीं है कि कोई बड़ी पब्लिक आई हुई है. तो अगर कोई बनना चाहता है तो बराह करम मुझे ईमेल कर दे at smuzammilhassan@gmail.com. That is single Z, single M, single S. And I would love to have you on board. But anyways, अच्छा ये रैंडम एक रैपिड फायर कुछ बोला था इसने बोला था जी, रैपिड फायर सेकंड गियर लगाओ और सारे क्वेश्चंस आंसर कर दो. चलो जी, मैं सारे के सारे रैपिड फायर पे क्वेश्चंस आंसर करता हूँ फौरन से पेशतर. Can you split the screen with demo type screen share to check the feature? Yes, you can, but you need to add something to do that. And unfortunately, I don't have like एक और बंदा मुझे ऐड करना पड़ेगा. You can share a link for fans who can join your live on YouTube. अवैस अहमद साहब ने ये बोला है. Does this mean कि आप कह रहे हैं कि ये as viewers join करें, या do you want people to join in terms of conversational join? Abdul bhai, can the live timing be a bit earlier, like around 10:30 PM? फुरकान अली साहब ने बोला था. फुरकान भाई, मसला ये है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि 10, 11, 10:30 बजे तो लोग जो हैं वो बैठे होते हैं, डिनर कर रहे होते हैं फैमिली वगैरह के साथ. तो बट ये मैं सवाल आप लोगों पे छोड़ जाता हूँ. आप बताएं, should the live be earlier? Should it be, what's the ideal time? Should it be 8 PM, 9 PM, 10 PM, 11 PM? मैं personally I prefer late night. मेरा बच्चा भी सो जाता है, मैं सुकून में होता हूँ. So 11 बजे माय दुबई टाइम, 12 बजे आपका टाइम. मुझे लगता है उस टाइम आप बिस्तर में बैठे होंगे, आराम से लाइव के ऊपर एक बैठक अटेंड कर सकते हैं, या फ्रीलांसर्स अपने लैपटॉप पे बैठ के काम करना शुरू कर देते हैं, साइड पे लाइव लगा सकते हैं. बट व्हाट आर योर थॉट्स? व्हाट डू यू थिंक इज अ बेटर टाइम? मुजम्मिल भाई, अच्छा ये हो गया. I have used StreamYards for my lives related to environment and climate. You can, of course, include more people. You can share screen for presentation. You can design a tagline that will be flashed. Yes, once I buy the $25 one, so I should be able to do all of that. Maybe make it private बैठक with 100 people. मलिक विजय साहब, कर तो मैं लूँ, पर मुझे बताए ना, इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा तो तब है कि अगर ये फेमस हो गई, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हो गए, मैं 1,00,000 1,50,000 बंदा मुझे देखना शुरू हो गया, तो कोई ब्रांड स्टैंड आएगा, कोई पैसा मिलेगा. 100 लोगों पे, या तो वो 100 लोग मुझे जो है ना वो महीने के $100 दे दें, तो 100 into 100 बनता है कोई $10,000. तो 100 लोग आते रहे, हम सुबह शाम बैठ के लगाते रहें, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. बट अगर हमें इसको कमर्शियली वायबल करना होगा, तो इट हैज़ टू बी ओपन फॉर एवरीवन. That's like Buzme Khas. I don't understand what that means. Buzme Khas, Kamal Wahab, if you can let me know what that means. How did we grow up so fast from listening to poetry on radio around 11 PM to live chat? I think that is one of the, see, that's what I mean. A lot of us have grown with the radio mentality and the TV mentality, but we haven't been able to find live interactive environments like this. And I think this is why I am a huge believer of lives. What is practically सबसे मुश्किल aspect of moving to Dubai? Is it the travel? I think it's the money. It costs at least 10x what it costs in Pakistan. Obviously उस 10x के ऊपर आपको बहुत quality of service भी अच्छी मिलती है, but it does cost quite a lot. So I think that is the most क्या था मुश्किल एस्पेक्ट. ऑब्वियसली एनवायरनमेंट थोड़ा फर्क है, आजकल गर्मियों में बाहर नहीं निकला जाता, लेकिन वो टू बी ऑनेस्ट आप घर पे बैठे हो, एसी चल रहा होगा, ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता. आई थिंक द बिगेस्ट problem is the money right now.
मैं भी दुबई आ जाऊंगा इंशाल्लाह ख़याम भाई, बिल्कुल 100%, ये तो हमारी बात हुई थी. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट टाइम. Is pursuing computer science wise in the AI-driven era with AI potentially replacing software engineering? No, I mean no, AI is not going to do that. Computer science, जो dumb computer science है वो replace हो जाएगी, but computer science जो डिग्री जो आज़ाद चाय वाला साहब कहते थे कि डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर आपको अब डिग्री की यूटिलिटी समझ आएगी कि डिग्री आपको फंडामेंटल सिखाती है. सो इवन दो जो छोटा मोटा स्किल बेस्ड काम है वो ऑटोमेट हो जाएगा. जो फलसफा है दैट विल ऑलवेज बी सुप्रीम, एंड एआई इज एक्चुअली गोइंग टू begin to create with more and more value of human driven falsafa. So degree, particularly computer science degree, will hold a lot of value in the future. Bilal bhai, ask everyone to write question before asking a question so you'll be able to easily. वो ये excellent idea चौधरी तैयब साहब. अगर आप सवाल कर रहे हैं तो उसके पीछे बड़ा सा कैपिटल लेटर में क्वेश्चन लिख दें, वरना मैं आपका वो सवाल नहीं पढ़ूंगा. Oh my God, if Khayyam bhai is also in Dubai, acha. Recently, you put up a story saying you'll be talking about psychedelics and meditation. What's up with that? Also, have you tried mushrooms? Zain Percy bhai, what's up with that? I haven't been able to find people to talk about that. In terms of what I have and have not tried, I feel like we're too early in Pakistan's journey to begin to answer that question on public streams. Maybe in a couple of years I may answer that. By all intents and purposes, I haven't tried anything. I have been working on a startup that I believe could be a very good product. Have past startup experience as well. Would love to discuss with you sometime to get your opinion as well. अहमद नमाज भाई, स्टार्टअप रिलेटेड या इस तरह की चीज़ें अगर तो आपने वैसी कमेंट डिस्कशन करनी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें. अगर आपको कोई इनसाइट चाहिए है, कोई मेंटरशिप चाहिए, तो आई डू एक्चुअली ऑफर वन-on-one मेंटरशिप्स. द लिंक इज ऑन माय इंस्टाग्राम. आई नो बिकॉज पीपल रीच आउट एंड देयर लाइक यार आप रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो मैंने उसमें सिंपल एक कैपिटलिज्म डाल दिया है कि यार आप पैसे दें और घंटा बुक कर लें एंड देन वी कैन हैव दैट. तो डिमांड एंड सप्लाई जो है वो वहाँ पर इकोनॉमिक्स 101 पूरी हो जाती है. हे मुजम्मिल, व्हाट आर यू डूइंग टू आंसर द आईजी क्वेश्चंस? ओह यस, आई थिंक 40 मिनट मार्क तक मैं ये करता हूँ, फिर मैं आईजी क्वेश्चंस के ऊपर जाऊँगा. दैट्स एन एक्सीलेंट रिमाइंडर. थैंक यू सो मच. व्हाई इज पाकिस्तान गेटिंग वे टू मच insecure for freelancers? Don't understand the question. Further context के साथ फिर से लिखें. How's your son transitioning through this? He's fairly happy. I think he was too young to realize we've moved countries. I would like to know your opinion on events unfolding in Middle East, such as Saudi recognition of Israel happening soon. What are its implications for the region and Pakistan? We'll probably do a live जिसमें we'll focus on जियोपॉलिटिक्स एंड देन, क्योंकि ये बहुत नुआंस टॉपिक है, उस पर हम ये बैठ के कर लेते हैं. आई थिंक एक्चुअली ये भी बड़ा अच्छा आइडिया है. मे बी आई शुड डू टॉपिक बेस्ड, कि मैं शाम को जब मैं अपनी लाइव अनाउंस कर रहा हूँ तो मैं इस पर टॉपिक डाल दूँ कि आज हम ये डिस्कस करेंगे. बिकॉज अभी ये हो रहा है मैं जंप कर रहा हूँ, एक टाइम पे मुझे जियोपॉलिटिक्स आ रही है, एक टाइम पे स्टार्टअप्स आ रही है, एक टाइम पे करियर आ रहा है. दैट्स इट्स टू कंफ्यूजिंग. आई कांट डू वेरी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी वैल्यू बिकॉज आई एम जस्ट हॉपिंग अराउंड, राइट. मैं फिर हर किस्म का अजीबोगरीब किस्म का जवाब दे रहा हूँ. तो वो I think topic based होना चाहिए है. It's a note that I've made in my mind. Pakistanis got no chill आजकल के हालात में. Obviously sir, बहुत हालात ख़राब हैं and I don't expect them to have chill as well. When are we getting the old Muzammil, the funny one? I don't know. I think it was so long ago and इतना lost है कि वो थोड़ा slowly and steadily it's gonna revive if it does. Well, I would like to know, अच्छा ये हो गया, what's the political situation in Pakistan right now? What do you see in the future? Political situation in Pakistan is stable. It is irrelevant. And anyone who's still following politics is an idiot. Because आपके ना follow करने से कोई फर्क पड़ेगा, ना आपके कोई बोलने से फर्क पड़ेगा. There is an entire great game happening across the world, and Pakistan is just an offshoot of that great game. So it is better to focus on other things and let it play out, and then whatever we are served at the end, we'll shut up and accept it, and then we will pivot our whatever we have to do. So to be very honest, politics के बारे में पाकिस्तान में बात करना ही stupid है. It's the biggest waste of time. Global politics different है, उस पर आप कुछ sense बना सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी politics के ऊपर आप सुबह शाम बैठ के बातें करते रहेंगे, अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, decisions कहीं और हो रहे हैं. And so I'd rather look at that. The question, what is the meaning of life, can be explained by the analogy. If you ask a chess champion what is the best move in the chess, the answer would be it depends on the situation you are in. I mean, that is true. I guess. I mean, that holds true for anything, right? But any question about anything is irrelevant because it's also arbitrary and chaotic. What is the main problem you are facing in Dubai, which you never expected? And it's so basic, like chili garlic. Yeah, every time I come in, I actually get a bunch of chili garlic sauce and every day, and tapal tanedar because I mean,
दुबई में सबसे बड़ा मेरा प्रॉब्लम यही था कि मैं जब चिकी पॉप्स खा रहा हूँ या मैं कुछ फ्राइज खा रहा हूँ तो मुझे चिली गार्लिक नहीं मिल रही थी. But anyways, good sir, big philosopher like Ghazali go through period like this where everything is meaningless. Absolutely, that is true. I can help people craft business plans and visions for their business. But I don't have experience of doing any business myself directly. I have only helped people. Can I become a startup consultant? I mean, anybody can become anything, but to be very honest, I don't think you should be a startup consultant. I think you should focus it more. Like कहीं ना कहीं आपका कोई expertise है जो जिसमें आप वो कर रहे हैं, आप उसको अगर arbitrarily startup consultant बोलेंगी तो I would be against that idea. You haven't done a startup. You don't know how a startup works. You shouldn't call yourself a startup consultant. You may be able to help in certain aspects of a startup. And so you should identify that and call yourself that rather than, because that is wrongful marketing, right? You're effectively telling a person, okay, listen, I can help your startup be successful. But you don't know that. Maybe you can, maybe you can't. So that's my opinion. Don't call yourself a startup consultant. Be more specific in terms of what value you can actually offer. Why startups in Pakistan don't become successful? Again, very detailed. I have a lot of opinions on that. A lot of cancelable opinions, particularly in the startup industry. A lot of those people are my friends, but इसके ऊपर पूरी एक live बनती है. I think we can dedicate. So अभी तक हमारे पास 2 lives आ गई. एक हमारे पास geopolitical situation of the region and दूसरी startups in Pakistan. One way of thinking about regrets is you'll never know how things would turn out, even if that one action turned out your way, because we think we know how it would go. And it can go in any way. That's very true and very profound. How do you strike a balance between your career and family life, and what strategies have worked for you? To be very honest, I don't. I'm really horrible with finding balance. These days, I'm trying to begin to build some sort of balance. But चूंकि मेरे nature of work में ये था कि हर चीज़ everything everywhere all at once होता था, तो या तो मैं अपने आप को काम में रख के burn out कर देता था, और मेरी फैमिली लाइफ अवॉइड होती थी, या मैं फैमिली लाइफ में घुस जाता था और फिर मेरा काम अवॉइड हो रहा होता था. तो अब मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर करना शुरू हो गया हूँ कि यार अच्छा इतने घंटे मैंने काम करना है. जिस तरह से अभी लाइव है तो ये 2 घंटे हैं. दिस इज 2 hours ऑफ माई लाइफ एवरी डे, 5 days a week. दैट मीन्स अराउंड 10 hours a week, 40 hours a week, 40 hours a month. और मैंने कैप किया है अपने आप को at 160 hours. That's 40 hours a week at 8 hours a day. तो थॉट इज कि 10 hours 40 hours मैं अपने महीने के दूंगा इस लाइफ को, 40 hours मैं महीने के दूंगा अपनी पॉडकास्ट को, और 80 hours मैं महीने के दूंगा ऑन कंसल्टिंग. चाहे वो 1-on-1 पर्सनल कंसल्टिंग एंड मेंटरशिप है, चाहे वो B2B सॉर्ट ऑफ कंसल्टिंग है फॉर बिजनेसेस, फॉर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, डिजिटल ब्रांड्स वगैरह, वो जो मैं जनरली कर रहा होता हूँ. एंड देन वंस आई हैव डन दैट, तो देन आई मूव ऑन. लाइक आई देन गो एंड स्विमिंग कर रहा हूँ आजकल, जिम स्टार्ट करना है, पेंटिंग करनी है, स्टफ लाइक दैट. सो आई वांट टू गेट इनटू दैट एज वेल. वाई स्टार्टअप्स इन पाकिस्तान? अच्छा, हो गया. अच्छा यार, कोई मज़े की बात सुनाओ. यार मज़े की बात मैं क्या सुनाऊँ? मज़े की बात मैं क्या सुनाऊँ? आई फील लाइक आई नीड टू ऐड समवन ऑन दिस पॉडकास्ट हु कैन ड्राइव मज़े की बातें, एंड देन आई कैन बी एड ऑन टू मज़े की बातें. शहबाज खान हुआ करता था हमारे लॉ स्टूडियोज में. ही वॉज एन एक्सलेंट पर्सन फॉर मज़े की बातें. But I'm not the right person to drive मजे की बातें. TBD पे आपको क्रिप्टो फॉरेक्स स्टॉक वगैरह के गेस्ट मजीद बुलाने चाहिए. God bless. Okay जी, we'll definitely keep that in mind. Why didn't you continue with DevSync? I loved your podcast with Usman Asif and I was looking forward to it. That's a long story. I will definitely share that sometime in the future. Do you believe one should marry while they're building their career, or wait till they have figured out? You should marry while you're in your struggling phase. That's my opinion. That is not a fact. It is not the right or wrong thing. But my opinion is कि जितना जल्दी शादी करें and grow together, rather than कि आप अपनी सारी struggles कर लें और फिर दूसरे बंदे को integrate करें और ना उनको आपकी struggles की insight हो, और फिर वो मतलब I feel like कि struggles साथ होनी चाहिए. I think partnership होनी चाहिए. So marry early if you can convince your families. एक बड़ी पॉडकास्ट के होस्ट मेरे दोस्त हैं, उनकी एडवाइस लेकर मैं भी ग्रो कर जाऊंगा. अभी जिसने दोस्ती करनी है कर ले. भाई, व्हाट इज योर सीक्रेट प्रोडक्टिविटी और कंसिस्टेंटी हैक, डेली रूटीन और एनी अदर सीक्रेट? अच्छा, वैसे ना ये जो क्वेश्चंस आते हैं, कभी आप लोगों ने नोटिस किया इस तरह के बड़े सवाल आते हैं, व्हाट इज योर हैक, व्हाट इज योर सीक्रेट? और ये ना क्योंकि लोगों के अंदर ये इंटरेस्ट होता है ना, इंसाइट होती है, तो इसके ऊपर चूना भी बड़ा लगाया जाता है. 10 ways that you can change yourself
5 things that all CEOs do to become millionaires. और वो आपको बताएंगे सुबह 5 बजे उठें, बुक्स पढ़ें, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ें. आप भी बेवकूफ़ हैं कि आप इस तरह के हैक्स ढूंढ रहे हैं, और जब कौम तो आपको बेवकूफ़ बनाए. ट्विटर के ऊपर नहीं लगे होते कि 50 थिंग्स दैट हैव चेंज्ड माय लाइफ टाइप. सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री पूरी इसके ऊपर खड़ी हुई है. देयर इज नो हैक. आई हैव स्पोकन टू सो मेनी सक्सेसफुल पीपल. देर ऑल जस्ट दीज chaotic broken people जो कि अगर वर्क पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उनकी फैमिली लाइव्स अफेक्ट हो रही हैं, उनकी कंसिस्टेंसी जीरो है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो डे इन डे आउट स्ट्रगल करते हैं, बट वो बस दे जस्ट ट्राई टू शो अप. देयर इज नो हैक. It's literally hard work mixed with luck. Like, just hard work isn't going to make you successful. Just luck isn't going to make you successful. And no amounts of hack is going to make you successful. So, personally, मुझे जब ये सवाल आता है तो मुझे बहुत fascinating लगता है, because these are the exact sort of questions जिसके ऊपर clickbait काम करता है, जिसके ऊपर self help industry चलती है. चूंकि मैं वो चीज़ें नहीं करता तो मुझे थोड़ी सी annoyance भी होती है, because अगर इस चीज़ की डिमांड है तो फिर मैं ये करना शुरू कर दूँ. 5 ways to do this. And I can make a ton of money and viewership. But please, for the love of good God, stop falling for this stuff. There is no such thing as a hack or a secret. It's generally very standard. But separately, yes, there could be other things कि यार आपने क्या ऐसा किया, क्या फॉर्मूला बनाया, क्या किया, ये क्या, वो क्या, वो स्पेसिफिक सवाल पूछ के आप मुझसे पूछ सकते हैं. What are your thoughts about talent in Pakistan? Is just talk about a lot of talent in Pakistan. सर, पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है. पाकिस्तान में ह्यूमन कैपिटल है. पाकिस्तान में ह्यूमंस हैं. ह्यूमंस को आप एजुकेट करते हैं तो टैलेंट प्रोड्यूस होता है. हमारी अनएजुकेटेड पॉपुलेशन है. हम कहते हैं जी पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट है. वो जनरली इक्का दुक्का कोई हमें टैलेंट उभरता हुआ नजर आता है, जिसको बेहतरीन एजुकेशन मिली होती है, जिसको सर्कमस्टांसेस क्वालिटी मिले होते हैं, तो वो सक्सेसफुल हो जाता है. फिर हम कहते हैं देखो वो सक्सेसफुल हुआ, तो पाकिस्तान में तो हर किस्म का टैलेंट है. एसाम उल हक टेनिस का इतना बड़ा चीज़ बन गया. वो अताउल्लाह खान ईसा खिलवी की बेटी जो है वो डिज़ाइन और ग्राफिक्स के अंदर इतनी बड़ी चीज़ बन गई. But these are isolated cases of individuals who were given the right education. By and large, our people are not being educated. They are not being provided the right training and development sort of circumstances to convert from capital to talent. And therefore, I don't agree Pakistan has a lot of talent. Pakistan has a lot of potential to produce talent. Even till date, अगर हम उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें और हम उनको करना शुरू कर दें, इसकी सबसे अच्छी मिसाल ये है कि जब आप यहाँ पर आते हैं ना, एक तो आपका हाई क्वालिटी टैलेंट की हम बात करते रहते हैं, कंप्यूटर साइंस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बट अगर आप मिडल ईस्ट में जाएं तो जो आपकी ब्लू कॉलर वर्क है उसके लिए पूरी दुनिया से बंदा आ रहा है, राइट. पाकिस्तान से जनरली द मोस्ट अनएजुकेटेड बंदा आता है. अगर एशिया की बात करें, अफ्रीका इज सेपरेट, तो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा अनएजुकेटेड बंदा आता है. वेयरएज अगर आप इंडिया से देखें, आप फिलीपाइंस तो इज इनक्रेडिबल. जितना वहाँ पर बिल्कुल बेसिक हाई स्कूल ग्रेजुएट उनका आता है और वो सब कुछ कर सकता है. वो कंप्यूटर्स यूज़ कर रहा है, वो चीज़ें को अच्छे तरीके से पढ़ सकता है, एंड देयरफॉर वो डायरेक्ट जाता है और जाके अकाउंटिंग की जॉब्स लेता है. वो ब्लू कॉलर वर्क ही है, बट वो कंपैरेटिवली हायर वैल्यू है. पाकिस्तान में वो जो बंदा था, जो बेचारा जिसका पोटेंशियल था, वो बियॉन्ड मजदूरी वो कुछ नहीं कर सकता. और वो उसकी वजह यही है कि उसको टैलेंट, उसको वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड ही नहीं की गई जो कि इंडिया में प्रोवाइड की जा रही है, जो फिलीपाइंस में की जा रही है. सो पाकिस्तान में मुझे बड़ा दुख होता है. मैं बड़ी दफ़ा मैंने एजुकेशन की बात की. नोबडी केयर्स अबाउट एजुकेशन. फॉर सम रीजन पाकिस्तान में एजुकेशन इज नॉट अ थिंग. इवन पीपल अराउंड मी, लाइक एवरीबडी इज लाइक, ओ मैं कपड़ों का बिजनेस खोल लूँ, मैं ये खोल लूँ, मैं वो खोल लूँ. पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो एजुकेशन की है. स्टार्टअप्स बनाए एजुकेशन के अराउंड. वो आज़ाद चाय वाला कोर्सेज बेचते हैं, ई कॉमर्स वाले, वो एक्सट्रीम कॉमर्स वाले कोर्सेज बेचते हैं. पूरी कौम उनका मुश्तरका मजाक उड़ाती है. पूरी कौम क्रिप्टो के ऊपर पैसे लगा के उड़ाती है. ठीक है, पूरी कौम रियल एस्टेट पे पैसे डुबाती है. लेकिन खुदा ना खास्ता कोई अगर आके सिखाने आ जाए तो उसके ऊपर पूरी कौम यूं से निकल के बैठ जाती है कि यार ये आप जो सिखा रहे हैं ना, ये तो कोई और भी सिखा सकता है. तो भाई आप सिनिकल प्लॉटों में क्यों नहीं होते सिनिकल? आप क्रिप्टो करेंसी पे क्यों नहीं हुए सिनिकल? आप 10 और फ्रॉड्स पे क्यों नहीं सिनिकल हो रहे? कोई अगर सिखा रहा है, सही सिखा रहा है या गलत सिखा रहा है, ठीक है, सिखा तो रहा है ना. जो कंज्यूमर है, जो सीखने जा रहे हैं, उसको समझ आ जाएगी कि यार मैंने सीखा या मैंने नहीं सीखा. वो एक चीज लेगा, उसके बाद वो आगे निकल जाएगा. बट समहाउ इससे आपको नजर आता है कौम की सिमत गलत है. मुझे पर्सनली लगता है there should be a lot more online courses happening around us. There should be a lot more trainings and development situations happening around us, जिसमें एक बंदे ने एक चीज सीख ली है तो वो 4 और लोगों को सिखा दे. एक सबसे गलत चीज हमें मशहूर हो गई, those who cannot do teach. ये बेसिकली जो है ना, जाके ये मजीद आपने टीचिंग के
जो जो इंडस्ट्री थी उसको मजीद जलील करने के लिए साइड पे जाके ये कर दिया कि नहीं जी टीचर तो सारे होते ही फारिग हैं, जिसकी वजह से जो भी काम का बंदा है ना, जिसके दिमाग में आता है कि शायद अगर मैंने कुछ सक्सेसफुली कर लिया और मैंने कोई समझ ली चीज़ तो मैं 4 लोगों को सिखा देता हूँ, और ऑब्वियसली मैं जब सिखा रहा हूँ, मैं अपना टाइम लगा रहा हूँ, तो मैं उसके पैसे ले लेता हूँ। तो सडनली उसके दिमाग में पहली थॉट ये आती है कि यार नहीं, लोग कहेंगे कि वो तू कोर्सेज करा के पैसे कमा रहे है, तू अब मंजन बेच रहा है। दूसरा उसकी थॉट ये आती है कि यार इसका तो मतलब है कि आई कांट डू एनीथिंग यूजफुल। तो वो बैठा रहता है, जो वो करता रहता है। हालांकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपके पास इनफ क्वालिटी टीचर्स नहीं है, अगर आपके पास इनफ टीचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं है, तो अपनी मदद आप, देयर शुड बी प्राइवेट सेक्टर एफर्ट्स ऑफ पीपल क्रिएटिंग मॉड्यूल्स जो उन्होंने सीखा हुआ है, जो अपनी इंडस्ट्रीज में यूटिलाइज कर रहे हैं, वो जाके 10 और लोगों को सिखाएं, और उसको सिखा के वो खुद भी पैसे कमाएं और उनको भी पैसा कमाना सिखाएं। बट एनीवेज दैट्स फलसफा। सॉरी आइस भाई, मैं थोड़ा सा फिर से फलसफे में बह गया, लेकिन ये थोड़ा मेरे दिल के करीब बात थी। We don't need another Ask Ganji Swag. Need your insight and what you're thinking or up to. So this is becoming Ask Ganji Swag. 46 मिनट मार्क हो गया है, 14 मिनट रह गए। उन भाई को मैंने उस टाइम पे बोला था कि मैं जो है वो oh my god, इतने सारे कमेंट्स हैं। वाई लाइव मुजम्मिल भाई, कोई स्कोप है लाइव का? सर मैंने जवाब दे दिया ऑलरेडी, आप बहुत लेट ज्वाइन किए हैं। जब ये पब्लिश हो जाएगी तो पहले 10 मिनट देख लीजिएगा, उसमें मैंने वो कर दिया है। यू नेवर पोस्ट शॉर्ट्स फ्रॉम योर पॉडकास्ट। यार शॉर्ट्स का मसला ये है कि वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट छोटे छोटे क्लिप्स होते हैं। वायरल इट्स लाइक अगर वो वायरल होते ही तब है जब उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया जाए और उसको जो है ना लाइक स्टूपिड बात को बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ऐसे तरीके से लिया जाए जिसपे लोग थोड़े से ऑफेंड हो जाएं, थोड़े से एग्री कर जाएं, पोलराइजेशन हो, और फिर उसके ऊपर लोग फालतू में जलील होते हैं। मैं खुद जलील हो चुका हूँ लाइफ में फॉर थिंग्स दैट वर टेकन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। तो मुझे, हालांकि मुझे लोग कहते भी हैं, मैंने ट्राई भी किया, बट पर्सनली मुझसे होता नहीं है कि मैं अपने गेस्ट को वायरल करूं और उसके नीचे फिर गंद किस्म के कमेंट्स आए। I don't know. Maybe that's a very stupid thing of me, but my team is working on it on shorts. But वो जो मसाला वाले जो शॉर्ट्स होते हैं ना, जो मिलियंस ऑफ व्यूज हिट करते हैं, वो हमसे नहीं होता, बिकॉज हमें बुरा लगता है कि यार काउंटर प्रोडक्टिव सा लगता है। एनीवेज, आई एम गोना go on the Instagram questions and take a few जो कि I feel like how's it going? In the 3 years I've completed my studies, so I want to do you believe your confusion might have something to do with multiple personalities that one can have? Very interesting. इस्माइल कासिम साहब ने ये पूछा था, और आई थिंक मैं तो एग्री करूँगा इस बात से कि इट्स दोज मल्टीपल रोल्स एंड दोज मल्टीपल एक्सपेक्टेशंस ऑफ मल्टीपल डिफरेंट सेगमेंट्स जिसकी वजह से मेरी कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा ड्राइव हो रही है। बिकॉज मैं कुछ करने के लिए सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वो क्या कहेगा, और मैं वो करने का सोचता हूँ तो मुझे लगता है ये क्या कहेगा, और मुझे कॉन्स्टेंटली वो नॉइज़ आ रही है ऑफ पीपल अराउंड मी, जिसकी वजह से somehow somewhere someone is just unhappy with what I might be doing, and I know it's a very unhealthy thing for me to focus too much on that, but I feel like that is really a major theme of why I've been confused. Is it necessary to stay positive? Why is there so much pressure to be positive all the time? It is absolutely not necessary to be positive. I know people created this thing, but honestly, यार मसला ये लोग अजीब से भी हैं। मैं I remember I got emotional in a couple of podcasts, and लोग आके बोलते हैं कि ओ लड़के जो हैं वो बेचारे इमोशंस नहीं दिखाते, लड़कों को इमोशंस दिखाने चाहिए हैं, टाइप्स ये वो। And then I got emotional, and then the same sort of people were coming in and bashing me कि हाय अल्लाह देखो ये जो है ना attention seeking है और ये और वो। I don't know, people are stupid and confusing. वो उस पर यही था कि वो लाइक लोग कहते हैं कि हमें नेगेटिव साइड भी दिखानी चाहिए, लोग कहते हैं कि हमें ऑथेंटिक होना चाहिए, लोग कहते हैं कि हमें अपने इमोशंस दिखाने चाहिए, बट द मिनट यू शो योर वल्नरेबिलिटी, दे आर द फर्स्ट वंस हू गोना कम एंड हाउंड यू। वो वेट करते हैं कि आप बस मार ही दें अपने आप को, उसके बाद जाके हम आपको जो है ना हीरो बनाएंगे। बट honestly, I don't know. I don't think people should be positive all the time. I think people should be more authentic. I think the internet, I hate the internet these days. I'll be very honest. I hate the internet. What's happened to Instagram, it's a bunch of crap
कि वो अजीब किस्म की रील्स हैं and it's all plastic and it's all made up and you're just swiping and there's no authenticity. People say they want to see authenticity, but I put out any authentic thing and the views are just down. I put up a stupid trending song looking pretty, doing a dance maybe, and it gets all the views. So I hate what the internet is becoming. I want it to be a lot more authentic. I want it to be वो जो एक डर मुझे आ गया था ना कि यार मैं अगर थोड़ा सा मैंने अपना दिखा दिया कि मैं कैसा हूँ, मैं क्या हूँ, मैंने वेप कर लिया, मैंने गाली दे दी, तो लोग आके कहेंगे अस्तगफिरुल्लाह आप ऐसे हैं, हाय अल्लाह ये क्या हो गया. This is one of the reasons why I started this life, where I could be more myself, honest to God, raw myself. I don't care if people hate it. Maybe people do hate it, but I want to regain control of my authenticity. And I feel like people, even if not today, over time they will see yaar, you know what, they don't even like what the internet has become, where political correctness and everything has to be in a certain way. Everything has to be, oh, you have influence, you have to say the right things. I can't. I'm a human being. I'll say stupid things and I'll learn and I'll grow and I'll change my opinions. So मुझे थोड़ा इंटरनेट broken लग रहा है. And I feel like आने वाले वक्त के अंदर people who actually are a lot themselves, a lot more organic and authentic, will actually grow as well. Hamna Raza is on the live as well. She's in Sri Lanka right now, and I'm taking care of our child all by myself. बड़ा आज मैंने उसको सुलाया भी और शिष्टम, so very good. Proud of myself. How to see how many people are watching Muzammil? Does YouTube show? I think you can scroll down and it can show. I am seeing an eyeball with 93 written next to it, so that means at this moment in time 93 people are watching this. Could you share some comments on coffee versus chai culture in Dubai? Sir, I would if I had gone out a lot. मैं क्योंकि बहुत गरीब हूँ इस टाइम के ऊपर, तो मैं बिल्कुल बाहर जाता ही नहीं हूँ, मैं घर पे ही रहता हूँ, जिसकी वजह से मैं टपाल के टी बैग्स और एवरीडे लेकर आया हूँ और मैं टी बैग वाली चाय घर पे ही पीता हूँ. So I don't know much about that culture, and as I'll explore more I might be able to comment on that, but अभी, because very honestly I don't have the money to be going out all the time and consuming nice coffee, so I don't know much about it as well. But anyways, you have already earned a loyal audience base, so to start being yourself, it's not like mature viewers would just go with cancel culture. That is the hope. And I'm not even coming in with the idea that I'll get cancelled. I won't get cancelled and all positive vibes. I know I will get cancelled, except is bar I'm just accepting it. Okay? I will get cancelled and I will not let it affect me. Do you believe religious extremism poses a threat to rationality and critical thinking? David Kims ने ये सवाल पूछा है. My thoughts are any form of extremism poses a threat to rationality and critical thinking. इसमें extremism की बहुत सारी types होती हैं, बहुत सारी evident और prevalent भी हैं पाकिस्तान में इस वक्त. जहाँ पर एक religious right exist करती है, वहाँ पर एक far left, liberal left भी exist करता है, जिसको लगता है कि सिर्फ west के philosophers, west की ideologies, west की thought is सुप्रीम, और वो जो बस लेकर आए थे तो वो कितने सियाने लोग थे, और हमारे लोग तो ईस्टर्न लोग तो हैं ही बेवकूफ़. तो रैशनली वो भी नहीं बात कर पाते. अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ ऑल्सो आई सेड कि आजकल अजीब सा हो गया टाइम कि आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई पढ़ा लिखा है कि नहीं है, कोई रैशनैलिटी हैज़ एक्चुअली gone out the window. And to answer your question, I think all forms of extremism, and it's fairly easy to begin to identify कि कौन extremist है. अगर कोई चीख के बोल रहा है, अगर कोई कह रहा है कि आप पागल हैं, आप जो है वो जाहिल हैं, कोई भी ऐसी बात कर रहा है, तो वो extremism के ज़ुमरे में ऑलरेडी मेरे हिसाब से आना शुरू हो गया है. अगर कोई, मेरा ज़ाती ख्याल ये कि if there is any commentator who tells you not to listen to someone else, that is the commentator that you should not be listening to, because that commentator thinks that you are intellectually not sound enough that आप बह जाएंगे उसकी बात के ऊपर, दूसरे की बात के ऊपर. लोग कहते हैं ना ये religious right की या फार लेफ्ट की बातों को बैन हो जाना चाहिए, हमारी सोसाइटी में तबाही मचा रहे हैं. मैं बिल्कुल भी इस बात से एग्री नहीं करता, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि every human being has a rational and an intellectually sound mind, and people should listen to everyone. और जो एवोल्यूशन ऑफ थॉट है वो सबकी बातें सुन के होगी. किसी को भी रिजेक्ट करके आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एक पर्टिकुलर बबल में डालते हैं, एक साइलो में डालते हैं. मेरा खुद अपना इतनी एवोल्यूशन हुई है यार, ग्रोइंग अप. एट सम पॉइंट मैं जो है वो
मैं मौलवी बनने लगा था एट सम पॉइंट, मैंने सब रिजेक्ट कर दिया हुआ था और मैं था कि पाकिस्तानी पागल होते हैं, ये सारे ईस्ट के लोग पागल होते हैं, वेस्ट का सीन ऑन है, मैं तो अमेरिका जाऊंगा. थिंग्स चेंज, थिंग्स हैपन. मैं अगर आज जाके किसी बंदे को थप्पड़ मार के बोलूं कि तू जाहिल क्या बातें कर रहा है, तो दैट इज द बिगेस्ट हिपोक्रेसी ऑनेस्टली. कोई जाहिल आदमी है, वो बैठ के जो है ना अजीब सेक्सिस्ट किस्म की बातें कर रहा है, तो सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, एवरी वन ऑफ अस वाज सेक्सिस्ट. एनीवन हु डिनाइज दैट इज लाइंग. एवरी पाकिस्तानी जो कि मेरी एज से ऊपर नीचे, वो एट सम पॉइंट सेक्सिस्ट था. उसको एक्सपोजर मिला, उसको एजुकेशन मिली, उसको ऐसे बड़े लोग मिले जिन्होंने तमीज से, प्यार से उसको समझाया. आज अनफॉर्चुनेटली हम जाते हैं और जाके थपड़े मारते फिरते हैं सबको कि यार तू जाहिल, तू जाहिल, तुझे समझ नहीं आ रही, हाय अल्लाह सेक्सिस्ट आदमी. मुझे अगर इस तरह बताया गया होता ना, तो शायद आज भी मैं एक वियर्डो एक्सट्रीमिस्ट होता. So I feel like extremism is on all fronts. It is growing. But having said that, I think there is a huge set of population that is now beginning to understand that this extremism, left or right, is destroying us. They are mostly in the center. They're sick of this, the politics. They're sick of the cup. And you'll see over the next couple of years this population to rise quite a lot. आई थिंक कि हम अपने जो एक्सट्रीम के फ्रिंजेस हैं उसके एज पे हैं, और अब हम वापसी पे सुकून की तरफ लौटने की जो साइकिल है उसकी तरफ हम स्टार्ट हो रहे हैं. And I think a lot more people will come up, and a lot more people will be supported and celebrated, जो कि ज़रा धीमे, जो कि दोनों की साइड्स को सुन के कह रहे हैं कि यार उसकी बात भी दुरुस्त है, उसकी बात भी दुरुस्त है, दोनों तो सोल्यूशन तो सेम ही चाहते हो. लेट्स कम एंड फिगर आउट कि एक्चुअली हाउ कैन वी मेक लाइव्स बेटर rather than you just fighting amongst yourself in your ego trip. तो आई थिंक दैट इज गोइंग टू rise even further. 56 मिनट और 44 सेकंड हो चुके हुए हैं. We're in the last 3 minutes of this daily live session. If you feel like you haven't had enough, that is great. Come back tomorrow. Exact time मैं आपको कल बता दूंगा. But come back tomorrow and we will continue this. I think I hope I'll get enough time tomorrow to be able to come with a topic. मैं चाह रहा हूँ कि मैं topic based daily का करूँ. But anyways, last few words. This was an alpha thing. I don't know कि कैसा था, आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस था. Did you come in? आपने टाइम गुजारा? Are you going out of it with a okay, this was interesting, I'll probably come back? Or did you come in कि यार मुजम्मिल ने बोला तो आ तो गए, बट कोई कंफ्यूजिंग सा था, अजीब सा था, पता नहीं क्या करना चाहता है, पता नहीं मिड लाइफ क्राइसिस चल रही है इसकी, पागल हो गया है, मैं फिर से नहीं आऊंगा. Whatever it is, let me know in the comment section below. I would love to hear your thoughts. जब भी पहली चीज स्टार्ट होती है ना, मेरी जिंदगी की पहली पॉडकास्ट थी जहांगीर तरीन साहब के साथ, आज भी यूट्यूब पे पड़ी हुई, आप जाके देख सकते हैं. उस पर आप देखें तो आई लुक लाइक अ कॉन्स्टिपेटेड, confused, extremely sort of underconfident kid. Obviously, that was the first podcast. Took me 370 to be able to drive it in a much better way. So I think मेरा गोल इसके अंदर ये नहीं है कि मैं पहले आऊँगा और आके मैं कोई बहुत bombastic किस्म की चीज़ बना दूंगा, बट मेरा गोल इसमें ये है कि मैं कंसिस्टेंसी के साथ एटलीस्ट 100 days बारिंग द वीकेंड्स में आऊँगा और मैं आके इसको स्ट्रक्चर दूंगा. आहिस्ता आहिस्ता हम इसको बेहतर कर देंगे. Which is why your feedback is gonna be हाँ, हमना ने बड़ी से बड़ी अच्छी बात बोली है. हमना कह रही है कि डोंट टेक फीडबैक बिकॉज देन द सेम थिंग इज गोना हैपन. आई एम गोना लूज ऑथेंटिसिटी. I'm gonna lose what I want to do, and I'll start doing what people want me to do. So maybe I'm not gonna take feedback. Maybe I am. I don't know. Share the feedback. I'll see if I want to read it or not. But anyways, we're at the last 1 minute 30 seconds. If you guys have anything to say, I will read that out loud now. Hi Muzammil, how much are you fond of games? I would love to see you doing Twitch as there is much more filtered audience. Their thoughts? Yeah, I used to play a lot of games back in the day. Warcraft 3, Quake 3, did a little bit of COD as well. But then जब Dota वगैरह आया था तो मैंने छोड़ दिया था. मुझे ज़्यादा strategy games पसंद हैं, Red Alert type, Age of Empires. Age of Empires मैं अभी भी खेलता हूँ, जो पुरानी Age of Empires 2 है. उस तरह की games I do actually like quite a lot. But then I'm going to Italy on a fully paid scholarship. On any tips for living abroad and how to represent my country there? Sir, congratulations on getting the scholarship and going there. I don't have any tips because I have just moved abroad, so I don't think I qualify as the right person to give you tips on doing any of that. Your views on left and right in Pakistan are just spot on. You are an extremely intelligent man. You don't belong in the category of broadcasters. Thank you so much, sir. I don't want to please do not badmouth anyone else. I don't want to do that, but thank you for the appreciation that you've given. I feel मुजम्मिल से पहले मैं कैंसिल हो जाऊंगा. मुजम्मिल भाई, I am अच्छा question अच्छा, love you brother, talk with you is always useful, educational.
We learn a lot. I personally like learning and grooming. Guys, okay, this is the last 10 seconds. Thank you so much for watching. This was the first alpha test. Tomorrow we're going to have a beta test. We're going to have a bunch of more tests before we can actually say this is the actual show. But thank you so much for watching. I had a great time and this gave me a lot of energy. I came in thinking कि पता नहीं दो चार लोग आएंगे कुछ होगा नहीं होगा ये flop होगा. You guys have made this. मेरा दिन बन गया. Honest to God, मेरा दिन बन गया. जो 90-80-90 लोग जो रुके हैं. You don't know how much it means to me. Thank you so much for watching and I'll see you tomorrow in the next one.